'cause you will see. Don't get close to me. Close doors to the key. I don't know how to feel. Devil's made of. All I wanna do is peacefully go back to sleep. Subscribe. Stay awake, there's demons after me. I have tried to call for help, but they don't hear a sound. Left alone with all the darkness, and it feels like I've drowned. Don't get close to me. Close doors to the key. I don't know how to feel. Devil's made of. All I wanna do is peacefully go back to sleep. But I need to stay awake, there's demons after me. I have tried to Subscribe call to- for help, left alone with all the darkness, and it feels like I've drowned. I've drowned. I've drowned.
हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेस्ट फ्रेंड के लिए कार्ड। मैंने जो है वो इस तरह की शीट ली है। ये 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है और विड्थ इसकी जो है वो तकरीबन 3 to 4 सेंटीमीटर मैंने रखी है। और यहाँ पर मैंने ये गैप रखे हैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से, मतलब मेजर करने के बाद मैंने 1 सेंटीमीटर का जो है गैप रखा है। ये आप मेजर करके ईज़िली जो है वो अरेंज कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो कार्ड बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन अगर स्टेप्स को फॉलो ना किया जाए तो हमारा कार्ड जो है वो सही से नहीं बनेगा। तो पेंसिल से मैंने लाइंस बना ली हैं ताकि मैं जो फ़ोल्ड करूँ तो ये ईज़िली हो जाए। मैंने पहले फ़ोल्ड करके इसको सेट किया हुआ है ताकि मुझे आसानी हो। इस तरीके से हम बारी बारी जो है इनको फ़ोल्ड करते जाएंगे। फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अहम होते हैं, तो बेहतर है उनके लिए बना ऐसे से गिफ्ट बनाता रहे ताकि वो भी खुश रहें और आपका रिलेशनशिप उनके साथ काफ़ी अच्छा रहे। और जब आप किसी को हैंडमेड चीज़ देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है बनिस्बत बाज़ार से ली हुई चीज़ों से। चलिए, इसके बाद मैंने हर्ट्स कट किए हैं काफ़ी सारे, 7 मैंने हर्ट लिए हैं इनको, और इनको मैं ग्लू करती जाऊँगी उन लाइन्स के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे फोल्ड किए हैं। इस तरीके से हम बारी बारी जो है वो हर्ट्स को यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। टोटल 7 हर्ट्स को हमने इसी तरीके से तरतीब से जो है वो लगाते जाना है, 1 बाय 1 लगाना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फोल्डिंग लाइन के ऊपर आइए, क्योंकि अभी हमारा जिस तरह का कार्ड बनने वाला है उसमें हमें सारे जो ये हर्ट्स हैं वो 1 बाय 1 सेपरेट चाहिए होते हैं। सो हमारा यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम इसमें इसको बाइंड कर दूँगी ताकि जो है ये हमें इजीली फोल्ड करना। फ्रेंडशिप के हवाले से अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स आर द प्रीशियस थिंग इन आवर लाइफ, एंड आई एम सो हैप्पी टू एंड ग्लैड टू हैव some of friends in my life, and one my bestie is so good that I can share everything with him, so I'm making this for my bestie, my BFF. so यहाँ पे अब हम इस तरीके से हमारा कार्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अब इस पे मैं लिखूँगी अपने BFF के हवाले से। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा फ्रेंड तो ज़रूर होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की हर बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं। सो फ्रेंड्स आर द बेसिक थिंग फॉर अस इन लाइफ। सो यहाँ तक हमारा कार्ड जो है वो रेडी हो चुका है, हमने इस पर लिख लिया है। अब हमारा कार्ड मुकम्मल तौर पे रेडी होने वाला है। बस हमने इस पर जो है वो नीचे पुल करने के लिए इसकी स्पेस काटनी है ताकि इसको हम ईज़िली यहाँ से पुल कर सकें। पुल करने के बाद हमारा ये एक लेदर की तरह, मतलब सीढ़ियों की तरह हमारा जो है ये कार्ड खुलने लग जाएगा। इस पर हम लोग यहाँ पे पुल लिख रहे हैं ताकि उसको आइडिया हो सके कि यहाँ से इसने पुल करना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये है कि हम इन हार्ट्स के ऊपर अपनी पसंद की जो भी बातें हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं अपनी बेस्टी के हवाले से यहाँ पे लिख रही हूँ, माय डियर बेस्टी। और
इसके हवाले से जो भी पॉइंट मेरे माइंड में आ रहे हैं, चाहे मैं थैंक यू करना चाहूँ, चाहे मैं सॉरी करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकती हूँ। अगर आपके ज़िंदगी में कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप ऐसा कार्ड गिफ्ट करना चाहेंगे या उसके लिए कुछ हैंडमेड बनाना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम लोग बहुत लो जा रहे हैं। आपकी मदद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम मज़ीद ऐसी क्राफ्ट कर सकें और मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है वो हमारा चैनल ग्रो करे। अभी हम बहुत ही अंडररेटेड हैं बट इंशाल्लाह सून हम जो है वो अचीव कर लेंगे अपने गोल्स और हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर गाइस इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच, लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। सो हमारा कार्ड यहाँ तक अब बन चुका है, हमारा कार्ड मुकम्मल रेडी है। अपने फ्रेंड्स को, अपनी मदर को, अपने प्यारों को, किसी को भी आप ये कार्ड सेंड कर सकते हैं। इसमें बहुत मेहनत तो नहीं लगेगी, बहुत ही जल्दी से, बहुत आसानी से आपका ये ज़बरदस्त कार्ड रेडी हो जाएगा और आप अपने दिल की बात बड़ी आसानी से अपने प्यारों को कह सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। Cause you will see. Don't get close to me. Close doors to the key. I don't know how to feel. Devil's made up. All I wanna do is peacefully go back to sleep. Stay awake, there's demons after me. I have tried to call for help, but they don't hear a sound. Left alone with all the darkness, and it feels like I've drowned. Back to sleep, but I need to stay awake. There's demons after me. I have tried to call you somehow, left alone with all the darkness, and it feels like I've drowned.
you ask me, 'cause you will see. Don't get close to me. Close doors to the key. I don't know how to feel. Devils made up. All I wanna do is peacefully go back to sleep. Stay awake, there's demons after me. I have tried to call for help, but they don't hear a sound. Left alone with all the darkness, it feels like I've drowned. Cause you see, don't get close to me. Close doors to the key. I don't know how to feel. Devils made up. All I wanna do is peacefully go back to sleep. But I need to stay awake, there's demons after me.